Start with David Clough here. Second row. Oh, at 120 for 2, it was looking okay for getting up to a par total. Can you explain what went wrong from that? Yeah, I thought, we probably every partnership we had struggled to take, I suppose, initiative to the Pakistan bowlers. I thought they bowled really well. They adjusted to conditions extremely well, and the wicket was obviously slow and low and hard to get away to start with. Every partnership we had started behind the right, which put us under the pump a little bit, and none of our batsmen seemed to get away. You feel like you were trying to do the right thing, but it just didn't happen? It wasn't sort of wrong tactics or anything? I felt as if we were always trying to take a positive option against them, but obviously given the conditions it didn't allow us to do that. Ben Stokes 60 balls and no fours kind of tells its own tale, doesn't it? I think it does. I think Joe Root in a similar vein. He's normally timing the ball even when he's in a defensive mindset. The fact that he was quite sluggish at the start, I was as well, and given I've been in reasonable form of late, I thought it was quite tough. Yeah. You touched on conditions there. What did you make of them? Do you feel as though they kind of played into Pakistan's hands a little bit? I don't think there was any home advantage, if that's what you're asking. We knew that we were going to play on a used wicket at some stage in this tournament, and certainly we found out the other day that today was going to be on a used wicket. And having watched the game against Sri Lanka, we actually didn't think it was that bad. But certainly today it was coming from Edgbaston. It was obviously a big jump in pace and bounce, and too much of an ask for us to adjust to, really. And following on from that, do you feel that it was kind of your side's failure to adapt to those conditions really that cost you, and does that leave you a little disappointed, bearing in mind the talent and the skills that you've got? Yeah, we left ourselves short today, adapting to the conditions, and it's a big frustration because I think we've played some great cricket in this tournament so far, and we weren't anywhere close to it today. And fair credit to Pakistan, they played brilliantly. You were unbeaten in the tournament. What do you think? This was a pressure match, or you were overconfident? Your team was overconfident? Certainly not overconfident. We played against some really good sides recently, and we've managed to beat them. And certainly that hasn't gone to our heads at all. I think coming into today's game, knowing that we were going to play on a used wicket, potentially brought Pakistan's game closer to their home. So it was a big challenge and one that was too far for us. Yes, what is the turning point of this match? Sorry, say that again? What is the turning point of this match? The turning point? I don't think there was any significant turning point. I thought it was pretty dull, pretty dull. Yes, sir. Yeah. Pakistan didn't seem to struggle in the same way on the pitch. Did it get easier, or is there some other explanation? I think the explanation is they played 2 days ago on it. Tom, then Paul. Owen, over here. Hiya. Sorry. 4 years ago you played the final against India in conditions that didn't suit you. The same's happened again today. You mentioned home advantage there. Do you think that it should be more of a factor in these tournaments, that the home side should enjoy that? I think it depends on what the ICC want to get out of the tournament. If they want it to be completely neutral ground and bring all the teams into the tournament, which would have no home advantage, I would keep it the same way. In World Cups, you have fresh wickets and they can vary from ground to ground, but certainly dictating it in a certain way if you're relating to the final that we played in was a bit far-fetched, really. We'll take two more. Paul. Owen, was it explained to you why it had to be a used wicket? There's eight wickets on that square, apparently. As I know it, every ground gets 3 pitches allocated to them. They're told to prepare 3 grounds, and depending on how the grounds come back from the first 3 games that they play, determine which pitches they use, but they're not allowed to prepare others. Chris? Owen, this tournament seen as a sort of a dry run for the 2019 World Cup. What can you guys take from it as a team, and do you think we'll be stronger for the experience? I think we are, certainly. One of the huge contributing factors to us topping our table and playing very good cricket in the group stages is that we've stayed true to what we believe in and what's worked for us the last couple of years. And I think
that's the continued formula for the future. I think it will have to evolve in whatever manner the game does over the next 2 years and the lead into the World Cup. But certainly I think we're moving in the right direction. Okay, done. Thank you. Josh Butler and Joe Root in the mix up a bit later on. Cheers. Guys, lots of attention. The mix zone is moving. It's downstairs today. Straight down here in this building. Okay. In the next area.
They're here. Gentlemen, switch off your mobile phones. First few questions in English, then we'll come to you. Sarfraz, congratulations. I just wanted to ask about Hassan Ali. He obviously bowled very well. He appeared to be hobbling with a bit of an injury. Did he have an injury during the match or coming into the game? No, I think he have a little bit shin problem, but he is okay and he bowling absolutely well for us. Sarfraz, congratulations. That was a great win. How did the pitch play? I think the pitch was very good. I think both team is equal pitch for both team. I think we play better cricket. That's why we win today. Sarfraz, like you lost the first match to India and now you're in the final. Can you just take us through the journey from your head as captain over the last week? How was it? But after the first loss, we were very down. But credit goes to, as I told before, credit goes to the team management. They boosted up really well for us, and credit goes to the players as well. They motivated very well, and up to the mark, everything. We bowling well, fielding well, and now today is also batting, clicking as well. So that's why credit goes to the bowlers and team management. After you won the toss and put them, did you expect such a total you could bowl them out? And what did you tell your batsmen to go about this target? Actually, I'm not expecting we bowled him out 210, but we expected today. Yesterday we came here and we see the pitch. We had a meeting and we thought if we won the toss, elected to bowl first. And if we restrict them 260, 270, so that's why target easy for us. And credit goes to the bowlers. They bowled really well, especially in the middle part, starting with Shadab. They bowled really well. They took Joe Root, then Hassan came in and he took wicket. Then Junaid Khan, Roman Rais, all credit goes to the bowlers. They bowled really well. After that defeat by India, what did you say to the team to inspire them to play this well? Or did the coach get you together and say something? I think we just told about after the India match, we just motivated the guys. Don't worry about the Indian match. Don't think this is gone. We have 2 matches. If we play good cricket, definitely we
we will win this tournament. Now we are in the final. Sarfraz, it's been a lot of your younger players who have played a starring role. Hassan with the ball, Fakar opening the batting. How pleasing is that for you as a captain trying to build a new team, that it's been your younger players that have helped you so much? You know, I'm very happy. I'm very happy about my youngster performance, especially, you know, Hassan day by day improving, Shadab day by day improving. Now today Fakhar Zaman, he's playing for third match and now he's batting just like a champion batsman. So I'm really happy about this performance. Hopefully he will do well inshallah in futures as well. Sarfraz, is that the best game that you've played with in Pakistan? Is that the best they've played with in any of the ODIs that you've been involved in? I think it was I think all three games is the best game when I was the captain. I think it was the best game. That's why, because you know we are in semi-finals. No one recognized us. So I was very happy for my team performance, and all credit goes to my team management and my players. How worried are you about Amir and his back? Mohammad Amir, and can he get back in the team after that performance? Yeah, I think he has a little bit back spasm. Hopefully he will recover for the finals. You bowled very well without him. You still need him. Yeah, obviously he's our main bowler. He's our strike bowler. Hopefully he will recover, inshallah. Imad Wasim went off as well. Is there any news on him? Sorry? Imad Wasim went off. Is there any news on him? Nah, he's a little bit niggles on the calf injury. I think he was okay. सरफराज बहुत बहुत मुबारक हो परफॉर्मेंस के लिए. मैं यही पूछना चाह रही थी कि यंगस्टर्स का जो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, हसन अली, शदाब, फ़हीम, रुमान भी, क्या कहेंगे रुमान के बारे में भी? आज जिस तरह वो आए, उनको सेमीफाइनल्स में प्रेशर गेम में लाया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, फिर हसन अली, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप इन सब यंगस्टर्स के लिए? देखिए मैं समझता हूँ कि इन सबकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. आई थिंक क्रेडिट जाता है सिलेक्शन कमेटी को, जिन्होंने इन तमाम लड़कों को जो सिलेक्ट किया डोमेस्टिक से और PSL की परफॉर्मेंस से, और उसके बाद यहाँ पे लेके आए. और उससे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इन लड़कों को जो कि इतने प्रेशर मैच में, इतने बड़े इवेंट में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं. जैसे कि आपने देखा शादाब खेला, फ़खर खेला, पहले मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की. हसन माशाल्लाह डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है. और जिस तरह आज रुमान जिससे अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आज रुमान खेला मैच, चूँकि सुबह आमिर अनफिट हुआ. तो आई थिंक क्रेडिट जाता है इन तमाम यंगस्टर को कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं अपने पहले इवेंट में, इतने बड़े इवेंट में. तो आई थिंक उनको जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है. और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी यंगस्टर आ रहे हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं. सरफराज, 4 मैच जो अभी तक हुए हैं, अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा आपकी जो बैटिंग है टॉप ऑर्डर उसने परफॉर्म किया है. पहले मैच में बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग भी नहीं चली, फील्डिंग भी नहीं. आज भी फील्डिंग में कैचेस का आपके साथ भी प्रॉब्लम है. बाकी आप समझते हैं कि बैटिंग आपकी आइंदा मैचों में उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभी भी? सर देखें, मैंने पहले भी इस मैच के श्रीलंका वाले मैच के बाद कहा था कि मुझे अपना पूरा कॉन्फिडेंस है अपने बैट्समैनों पर, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़बरदस्त हमारी टीम में सारे बैट्समैन हैं. और इंशाल्लाह देखें जिस तरह आज हमारे बैट्समैनों ने बैटिंग की तो पूरा क्रेडिट जाता है उनको. बॉलर तो माशाल्लाह अपना काम कर ही रहे हैं, और आज बैटिंग भी हमारी क्लिक की है. अजहर ने रन स्कोर किए हैं, बाबर माशाल्लाह दोबारा निक में आया, हफीज़ भाई अच्छे निक में. तो ये अच्छा साइन है हमारी टीम के लिए कि फाइनल से पहले तमाम बैट्समैन जो है हमारे भरपूर निक में. और जहाँ तक देखें फील्डिंग की बात, तो फील्डिंग आज भी माशाल्लाह हमने अच्छी की. एक आध कैच वो डिफिकल्ट कैच था, बाबर आजम से कैच उठा, लेकिन अदरवाइज हमारी फील्डिंग देखें आप हर मैच में इंप्रूव हो रही है. और जितने भी फील्डर थे तमाम यंगस्टर हैं, सब जान मार रहे हैं. एक आध कैच आगे पीछे हो जाता, लेकिन अदरवाइज अगर आप ओवरऑल टीम की एफर्ट देखें तो ज़बरदस्त टीम एफर्ट थी. सरफराज, फाइनल में इंडिया चाहिए या बांग्लादेश? सर कोई भी टीम आ जाए, दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक है. जो अच्छा खेलेगी वो फाइनल में आ जाएगी. सरफराज, जब टीम पाकिस्तान यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आई तो सबने कहा 9 खिलाड़ी पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, नई टीम है, बिल्कुल हर किसी ने इसको अंडर एस्टिमेट लिया. लेकिन अब ये टीम फाइनल खेल रही है, तो क्या कहेंगे कि फाइनल खेल रही है और नौजवान खिलाड़ियों ने जो परफॉर्म किया? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि आज हम लोग यहाँ पे फाइनल के लिए रेडी हैं, और इंशाल्लाह कल हम लोग लंदन जाएंगे. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा खुशी है एज अ कैप्टन मेरे लिए भी, पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए भी, कि ये नौजवान टीम जो है जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, शायद यहाँ पे भी और हमारे मुल्क में भी कोई इस टीम को मतलब कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. तो आई थिंक क्रेडिट दूंगा मैं अपनी पूरी टीम को, पूरी टीम मैनेजमेंट को, और उसके बाद तमाम लड़कों को, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने इंडिया के मैच के बाद कमबैक किया पूरी टीम ने,
तो आई थिंक तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी भी को भी यहाँ पे बैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हम पे सपोर्ट किया। जो लड़के हमने मांगे, जो लड़के हमें चाहिए थे, वो उन्होंने हमें दिए। तो आई थिंक ये देखें बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले वक्तों में इस टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, और इंशाल्लाह इस टीम को सपोर्ट मिली तो आने वाले वक्तों में ये तमाम लड़के और ये पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सरफराज, 2 सवाल हैं। आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिसने इंडिया को हराया था, तो क्या उस मैच से भी आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी फाइनल में जाते हुए? और दूसरा ये कि फ़खर के साथ आप खेले होंगे कराची में भी क्लब क्रिकेट, तो फ़खर की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी जर्नी के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल ऑब्वियसली वो चीज़ भी दिमाग में होगी, क्योंकि मेरा एक बड़ा इवेंट का फाइनल था अंडर 19 का, मेरे कैरियर का पहला एक इवेंट था एज अ कैप्टन, और बिल्कुल वो चीज़ दिमाग में होगी। और मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह करे कि जो भी फाइनल में हम लोग, जो भी टीम आए, उसके खिलाफ हम लोग ये मैच जीतें। और जहाँ तक आपने फ़खर की बात की, बिल्कुल जो है फ़खर मेरे साथ, उसने मेरे साथ ही क्लब क्रिकेट स्टार्ट की। हम लोग एक ही क्लब में खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में खेलते थे। उसके बाद वो मर्दान शिफ्ट हो गया, तो मैंने उसको खेलते हुए देखा है। अंडर 19 में उसने कराची से उसका डेब्यू हुआ, पहले सीजन वो बेस्ट बैट्समैन हुआ। उसके बाद फिर वो चला गया यहाँ से मर्दान, वहाँ से डोमेस्टिक में खेलता रहा, और उसके बाद जब यहाँ पे आया ए टीम में हमारे साथ साथ था बिल्कुल, और उसके बाद बिल्कुल ए टीम से उसको यहाँ पे लेके आया। पहले T20 उसने खेला, वहाँ पे उसने बैटिंग में अनफॉर्चुनेटली उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरह उसको यहाँ पे मौका मिला और उसने अपने मौके को अवेल किया, तो आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। आई थिंक वो बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि माशाल्लाह से जिस तरीके से वो खेल रहा है, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इसी तरीके से आगे खेलता रहे और पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे। सरफराज, जो फाइनल है ओवल में है, वहाँ आप कोई मैच नहीं खेले ये टूर्नामेंट में, ये कोई डिसएडवांटेज है? देखें, अब ये ऐसी कोई डिसएडवांटेज वाली बात नहीं है। अब ऑब्वियसली हमारा पूल ऐसा बना हुआ था कि हमने बर्मिंघम और कार्डिफ में ही मैचेस खेले, तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम जाएंगे वहाँ पे एक दो दिन जो पहले हमारा प्रैक्टिस है, तो कोशिश करेंगे जल्दी से कंडीशन को अडॉप्ट कर लें और अच्छे से भरपूर तैयारी के साथ फाइनल मैच खेलें।